Under attack over his alleged inflammatory speech, Union Minister Ramshankar Katheria today claimed he did not target any community while speaking at a murdered VHP leader's prayer meeting in Agra on Sunday. At that meeting, Katheria had said that the killing was a conspiracy against the Hindu community, but the opposition has demanded his resignation. First, he talked of conspiracies against Hindus at a prayer meeting on Sunday for the murdered VHP leader in Agra. हिंदू समाज के साथ जो कुछ षड्यंत्र हो रहे हैं उसको हमें जागरूक होकर के समझना होगा. Now, the Junior Education Minister Ram Shankar Katheria says he wasn't saying anything inflammatory. जो एक अखबार में छपा है, अंग्रेजी के अखबार में, पूरी तरह असत्य है. मैं उसको लेकर मैंने किसी समुदाय का नाम नहीं लिया. हाँ, मैंने ये जरूर कहा कि जिन्होंने हत्या की है उनको फांसी हो. But soon, Katheria was cornered in Parliament with the opposition demanding his resignation. आई बार जब ऐसी बात होती है, श्री नरेंद्र मोदी जी चुप रहते हैं. बेहतर यही होगा वो कार्रवाई करें. जो उनके साथियों ने बयान दिए हैं वे बिल्कुल देशद्रोह की परिधि में आते हैं. इस तरह के मंत्री को मंत्रिमंडल में नहीं रखना चाहिए. The BJP, however, is standing by Katheria's comments. कथेरिया जी का बयान है, उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है. और मुझे लगता है कथेरिया जी के बयान के बाद और कोई टीका टिप्पणी करना मैं मानता हूं कि उचित नहीं है. While the BJP MP from Fatehpur Sikri, who also spoke at the Sunday meeting, has no regrets for any inflammatory comments made there. बदला नहीं लेंगे तो क्या आरती उतारेंगे ऐसे लोगों की और दूसरे समाज के लोगों को गोली मार के हत्या करेंगे, तो ये कहाँ का कानून है. UP police here in Agra refuses to come on camera, but sources indicate they found no connection with the alleged cow slaughter angle. In fact, they say the accused have had past criminal record and are known troublemakers in the area. They are now looking into an alleged money dispute that could have turned into a personal rivalry between the VHP leader and the prime accused in this case. All this while other accused and their families are crying foul as well. दिमागी हालत सही नहीं रहते हैं, वो जिंदगी भर दवा खाता है. क्या 10 बजे मेडल हुआ तो जो इंसान का हक हो जरा सा भी लखन होता वो कारखाने के अंदर बैठ सकता है. Elections around the corner and a case of simple murder being played up for political motives is not new for UP. But when a senior minister in the Union cabinet indulges in such inflammatory speeches, it's certainly raising a lot of tough questions. In Agra, with camera person Manvendra Gautam and Naseem, I'm Sonal Mehrotra, NDTV.